Assalamu alaikum. I'm Mirza Zuhair Beg and you're watching my channel. That is the Zuhair Beg channel. So today I'm going to explain the next uh, chapter of biology part 2. और आज का जो हमारा चैप्टर होगा ये बेसिकली ये बिलोंग कर रहा है सेल साइकिल के नाम से. इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और इसके अंदर हम देखेंगे मुख्तलिफ तरह की ऑब्जेक्टिव. द मोस्ट इम्पोर्टेंट or most expected objective related to the chapter number 1. So what do you say about chapter number 1 or chapter number 21 sorry. इसके अंदर हम कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. So let's start with the name of Allah Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. So the first one, the first MCQ of this chapter is what the cell undergoes a sequence of changes which involves सेल के अंदर जो है वो कौन सी चेंजेस के अंदर जाता है सेल अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो है. either it goes under the change of the growth, cell division, replication of DNA or all of these. तमाम किसी तरह की चेंजेस जो है वो सेल के अंदर देखी जाती है और ग्रोथ भी होती है, सेल डिवीजन भी होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी होती है जो कि एक सेल साइकिल में देखी जाती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. सेकंड एमसीक्यू, द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स. दो कंसेक्टिव जो डिवीजन्स होती हैं सेल डिवीजन, उनके दरमियान में जो पीरियड है वो कौन सा. इंटरफेज, माइटोटिक फेज, मियोटिक फेज, लैग फेज. Lag phase is present in the bacteria and mitotic phase is a mode of cell division. Meiotic phase is also a mode of cell division. So interphase basically it is a period of life cycle between two consecutive. यानी पहला जो सेल जो है वो डिवाइड होने के बाद बना है तो उसके बाद वो फर्दर वो सेल दोबारा से इसी साइकिल में मूव करता हुआ अल्टीमेटली वो डिवीजन की तरफ जाएगा. सो द राइट आंसर इज इंटरफेस. ऑप्शन ए is the right answer of MCQ number 2. So which one is the next MCQ of this chapter number 21. ये हमारे पास जो है नंबर 3 पे, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स एवरेज लेंथ ऑफ सेल साइकिल इज ब्लैंक आवर्स. ह्यूमन के अंदर जो सेल साइकिल की एवरेज लेंथ है वो कितनी है. दैट इज अबाउट 24 आवर्स. 24 घंटों का एक सेल साइकिल होता है. द फुल सेल साइकिल इन यीस्ट सेल्स इज अबाउट फॉर ब्लैंक मिनट्स. तो यीस्ट के अंदर जो टोटल टाइम पीरियड है वो 90 मिनट्स है और ह्यूमन के अंदर एज यू नो अभी मैंने बताया भी आपको कि वो 24 आवर्स का होता है. DNA is synthesized and chromosomes become doubled in G1 phase. No, this one is the first growth phase. S phase, G2 phase, second growth phase. G0 is a resting phase. So the right answer is S phase. That is a synthesis phase because DNA synthesis is occurring during this phase. So that's why the right answer is option B. That is the S phase. So which one is the MCQ number 6? The blank cells in human body. Blank cells in human body remains in G0 phase for lifetime. So कौन से सेल्स हैं जो इंसान की बॉडी में इनमें से जो कि लाइफ टाइम जो है वो ह्यूमन की वो जो है वो रेस्टिंग स्टेज में रहेंगी, G0 फेज में रहेंगी. नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन मैरो सेल्स. सो नर्व सेल्स हैं और हमारी आइज के अंदर जो है वो रेटिना के अंदर सेल्स हैं. ये दो ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्चुअली देखे गए कि वो थ्रू आउट द लाइफ मतलब फर्दर डिवाइड नहीं होते. सो ब्लैंक इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन that ensure the same number of chromosomes. The same number of chromosomes is always remain during the mitosis. So option A is the right answer because in meiosis the number of chromosomes remain half. So or in mitosis में number of chromosomes constant रहते हैं. So that's why option A was the right answer. The microtubules composed of tubulin proteins and actin, this one is present in the microfilament, not in microtubules. Fermentin, this one is present in the intermediate filament, not in microtubules. So a trace of RNA and albumin. Albumin maintain the osmotic balance, and so the right answer is trace of RNA. So tubulin proteins and trace of RNA present in the microtubules. So this one is the right answer, trace of RNA. The next MCQ number 9, the specialized microtubules including esters and spindles these are called mitotic apparatus, the apparatus that is used for the cell division. At the beginning of prophase of mitosis, the chromatin material get condensed and chromosomes appear as thin thread. यानी प्रोफेज की स्टार्टिंग पे माइटोसिस की जो प्रोफेज है उसमें क्रोमाटिन मटेरियल कितना कंडेंस होता है कि उसका साइज जो है वो कितना थिन नजर आता है. 0.25 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 0.25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर एंड 0.25 टू 0.50 माइक्रोमीटर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0.5 टू 50 माइक्रोमीटर इसकी कंडेंसेशन होती है, इतना थिन थ्रेड रह जाता है ये. Blank is the most critical phase of mitosis which ensures the equal distribution of chromatin in daughter cells. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase.
So the right answer is the most critical phase for mitosis, which ensure equal distribution of chromatid. So anaphase is the stage in which that shows the equal distribution of the chromatin material. So mitotic apparatus disorganize, the nuclear membrane and nucleoli reorganize during. अब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें माइटोटिक apparatus खत्म हो जाता है? डेफिनेटली ये वो स्टेज होगी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि सेल प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है, उसकी मैक्सिमम क्रोमोसोम सेपरेशन हो गई है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई रीऑर्गेनाइज होते हैं. दिस वन इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड दिस इज नॉन एज अ टीलोफेज. So option D is the right answer. Blank. During the metaphase, chromosomes align at the equator of spindle, forming they form equatorial plate, they form metaphase plate, they form phragmoplast. Phragmoplast is the wrong answer because this one is a membrane that is formed by the secretions of Golgi apparatus. So the right answer is both A and B. That means equatorial plate and metaphase plate. The option, the MCQ number 14. MCQ number 14. Karyokinesis involve the division of. It is a division of nucleus because karyo mean nucleus and kinesis mean division. So option A is the right answer. In plant cells at cytokinesis, a membrane structure called blank from vesicle originated from the Golgi apparatus. So which structure? It is a plasmodesmata. अभी मैंने plasmodesmata, phragmoplast, primitive streak, contractile ring. राइट आंसर इज फ्रेगमोप्लास्ट. रिसेंटली मैंने बताया कि गोल्गी apparatus के वेसिकल से बनने वाली प्लांट्स के सेल्स को सेपरेट करने के लिए, डिवीजन के लिए फ्रेगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है. कैंसर इज काज मेनली बाय म्यूटेशन इन. It is occur in the somatic cells, the mutation in the somatic cells. The spreading of tumor cells and establishment at secondary area. ट्यूमर सेल्स का एक जगह बनना और फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना और वहां पर जाके वो कैंसरस रेपिटेशन होना. सो दिस वन इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस स्टेज. Metastasis stage. The tumor cells that are small size and localized, benign tumor, because delocalized tumor are called malignant tumor, and so that's why benign tumor is the right answer. Sarcomas and lymphomas are the types of cancer, not the you can say that the conditions of cancer. Non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments due to chaos meta formation. This is known as a crossing over. Crossing over meiosis 1 के जो सब फेज है, सब फेज पैकेटीन, उसके अंदर एक प्रोसेस है जिसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और उनके एक्सचेंज होना, वो सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. Next MCQ, that is the MCQ number 20. The pairing of homologous chromosomes called synapses occurring blank stage of prophase 1. Prophase 1 of meiosis 1 की कौन सी ऐसी फेज है कि जिसके अंदर पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes होती है, synapses होती है. So this one is a leptotene, no zygotein, पैकेटीन, diakinesis. Leptotene और diakinesis में क्रोमोसोम में कंडेंसेशन होती है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है. So the right answer is zygotein in which synapses occur. So the next MCQ number 21. So which one is MCQ number 21? Blank is the phase of prophase 1 or prophase 1 in which condensation reaches to its maximum. Condensation जो है वो maximum होता है diakinesis के दौरान. So the right answer is option D. The individual have additional sex chromosome. This is sex chromosome होगा. Down syndrome में autosome extra आता है. Edwards syndrome is another autosome trisomy, and Turner syndrome. This one is also the one sex chromosome is reduced. So the right answer is A. Option A, that is a Klinefelter syndrome. Next MCQ number 23. Blanked individuals have female appearance with short stature. कि वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो फिजिकली फीमेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टेचर होते हैं, उनकी नेक वेब्ड होती है और विदाउट ओवरीज होती है. Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Down syndrome, and Edwards syndrome. The right answer is Turner syndrome. और यही वो कंडीशन है जिसमें वो फिजिकली फीमेल होती है लेकिन क्लाइनफेल्टर में वो फिजिकली मेल होती हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम. सो थैंक यू वेरी मच. ये हमारा आज का टॉपिक था. तो कल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.